हे गाइस, आई एम अर्नव और आप सभी का एक बार फिर से अर्नव्स माइंड बेंडर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को एक मिरर क्यूब से 5 ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगा। गाइस, अगर आपको एक रूबिक्स क्यूब से कुछ पैटर्न्स बनाना सीखने हैं तो मैंने उसके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो गाइस, अब हम बनाएंगे डोनट्स पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए एक बहुत ही छोटी सी एल्गोरिदम है। M E M E M E M E। ऑलराइट, सो अब हम बनाएंगे क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए कुछ ऐसी एल्गोरिदम है। F L F U प्राइम R U F2 L2 U प्राइम L प्राइम B D प्राइम B प्राइम L2 U। सो जो थर्ड पैटर्न हम बनाएंगे उसका नाम है क्यूब इन अ क्यूब पैटर्न। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हम कुछ ऐसी एल्गोरिदम लगाएंगे। U प्राइम L प्राइम U प्राइम F प्राइम R2 B प्राइम R F U B2 U B प्राइम L U प्राइम F U R F प्राइम। तो दोस्तों, अब हम बनाएंगे क्रॉस पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम कुछ ऐसी एल्गोरिदम लगाएंगे। R2 L प्राइम D F2 R प्राइम D प्राइम R प्राइम L U प्राइम D R D B2 R प्राइम U B2। सो गाइस, जो लास्ट पैटर्न हम बनाएंगे उसका नाम है 3D Y पैटर्न। इस पैटर्न को बनाने के लिए हम कुछ ऐसी एल्गोरिदम यूज करेंगे। F B प्राइम
U F U F U L B L2 B prime U F prime L U L prime B. So that's it for today guys. ये थे वो 5 beautiful patterns on a 3x3 mirror cube. Thanks for watching guys. प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।